Have you written the questions? Okay. First question. The number of electrons flowing through a conductor per second is 3.3 into 10 to the power 19. You have to find out the current flowing through the conductor. Find out the current flowing through the conductor. So this was a question of 2023. Now we'll solve. Very easy. What is the formula for current? How to calculate current? Current I equal to charge by time. Charge by. So current is rate of flow of charge. Charge divided by time. Charge Q, time T. We know Q equal to N into E, where N is the number of electrons. Number of what? Electrons. So NE by T. NE by what? T. What is given in the question? क्या लिखा है क्वेश्चन में? The electrons flowing per second. Per second का मतलब किसका वैल्यू दिया है? N by T का वैल्यू डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में. N by T is what? Number of electrons per unit time. Number of electrons, because they are talking about conductor, और कंडक्टर में चार्ज कैरियर मतलब कौन? Only electrons, only word. That means सर N by T का वैल्यू कितना दिया है? 3.3 into 10 to the power 19. E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19. What we want? Current. So current will be N by T का वैल्यू कितना? 3.3 into 10 to the power 19 multiplied by E. 1.6 into 10 to the power minus plus 19 minus 19 will get cancelled out. So I equal to how much? 3.3 into कितना बोलो? 5.28 approximately. So this is going to be 5 point. So correct option will be option what? D. Option D. Whenever they say current flowing in the conductor per second, that is N by T is directly given to you. N by T is directly given to you. Next. See next question. What is the next question? See, read the question. Two wires X and Y of the same material and of equal lengths having area of cross section capital A and 2A. There are how many wires? Two wires. दोनों वायर का क्या सेम है? लेंथ सेम है. सेम मटेरियल बोला है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है. क्या सेम है?
You have to identify the things which the question setter is trying to convey. Same material, that means resistivity is same. Equal lengths, only the variation has occurred in area. In what? One is A and the other is 2A. They are connected in parallel across an ideal battery of EMF E. What we need to find out? Find the ratio of current density in wire X and wire. What is current density? What? Current density is current flowing per unit which area? Normal area. Which area? A perpendicular. A perpendicular. Now sir, J is a vector quantity, so its magnitude is I by A. What is I? Sir, V by R. V by R according to Ohm's law. I equal to V by R. हाँ? R का फॉर्मूला, we have to relate with area. So rho L by A. Now J will be I. I is V by R. So V by R divided by A. And what is R? What is R? Rho L by A. So area will get what? Cancel out. So V by rho into L. V by rho into what? This is the modified formula for current density. For what? Now sir, we can see very clearly कि J एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? J एरिया के ऊपर डिपेंड करता है या पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ? अभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोचना है. दे आर कनेक्टेड इन व्हाट? पैरेलल. तो अगर मैंने दो वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, दो वायर को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, इसका एरिया A है, इसका एरिया 2A है, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी. So obviously here the potential difference and here the potential difference will remain same. Will remain what? Because in parallel connection potential difference remains what? Same. तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, ये x है ये y है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है. एंड सर लेंथ तो दोनों का सेम है. इसका लेंथ भी कितना था? L. इसका लेंथ भी कितना है? इसका रेजिस्टिविटी कितना है? रो. इसका भी रेजिस्टिविटी कितना है? रो, बिकॉज दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. सर V भी सेम है, रो भी सेम है, L भी सेम है. दैट मीन्स Jx by Jy will be V by rho L divided by V by. So answer is what? 1:1. Answer is what? 1:1. So this kind of modifications you have to do in the exam because these are previous year questions. You have to see whether current density depends on area or not.
समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जाऊं? नेक्स्ट, read next question. A metal rod of cross sectional area A. So this is the metal rod of cross sectional area how much? A, and length L has a current I flowing through it when a potential difference of V volt is applied across its ends. Okay. Now the rod is cut parallel to its length. Language समझना पड़ेगा. Parallel to its length means along the length. The rod has been cut. अगर बोलता परपेंडिकुलर टू लेंथ मतलब ऐसे वर्टिकली. अगर बोलता है along the length मतलब horizontally, parallel to the rod. Parallel to its length into two identical pieces and joined as shown in figure 2. What potential difference must be maintained across the length of 12? ये जो नया लेंथ बना, नया रॉड बना, इसको काट दिया बीच से काट दिया मतलब इंडिविजुअल रॉड का लेंथ कितना था? L और L. और ये जो दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिया? सीरीज में. कैसे कनेक्ट कर दिया? अच्छा सर, ये L दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया मतलब टोटल लेंथ नया वाला रॉड का कितना हो गया? तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा ताकि करंट का वैल्यू सेम रहे? द करंट इन द रॉड इज स्टिल आई. करंट इन द रॉड इज, सो विल गो फॉर फर्स्ट सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? टेल मी. यू हैव दिस रॉड whose cross sectional area is how much? A. And what is the length of the rod? L. What is the current flowing through the rod? I. And what is the potential difference maintained towards its end? V. Okay. I is equal to V by R. R is equal to rho L by, so I is equal to V by rho L by, so I is equal to VA by rho L. VA by what? Now what they have done? They have what? Cut the rod along its length, along its what? That means, sir, if they have cut the rod along its length, so you have now how many rods? And they have joined the two rods. This is L, this is what? So total length is how much? But we know, अगर इसको बीच से काटा गया है, अभी एरिया A होगा या A by 2? That is very clear. Length and area are inversely. We know volume remains what? Area into length remains what? So if area and length are constant, that means area is inversely proportional to what? तो अगर लेंथ डबल हो गया है तो एरिया का वैल्यू क्या होगा? हाफ हो जाएगा. होगा नहीं होगा? नाउ सर दे हैव टोल्ड दैट व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस. ये दोनों एंड में मुझे अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है? सपोज दिस इज V डैश. सपोज दिस इज हाउ मच? अभी V डैश का वैल्यू निकालना है और करंट क्या बोला है? सेम रखना है. सो करंट विल बी नाउ, टेल मी, I. Current is what? I. VA by rho L. V will be V dash. I do not know what is going to be the final potential difference. Area is how much? Area is how much? But how will you calculate total resistance? Now total resistance, how will you calculate? This is R dash. R dash will be how much? दोनों सीरीज में है. दोनों सीरीज में है तो R1 प्लस, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2. व्हाट इज R1? रो L बाई A by 2 plus rho L by A by 2. So what is going to be the resistance in this case?
2 will go up, 2 to 4. 4 row L by only A. Now, sir, rho L by A is what? R, original resistance. So, R dash equal to 4 R. That means, sir, I equal to or V dash equal to, let me write directly, I into what? R dash. So, V dash equal to I into R dash is what? 4R. That means, sir, V dash will be 4 into IR. 4 into, and V was what? I into R. That means V dash equal to 4 times of. So this is your answer. Final potential difference will be 4 times of the initial value. 4 times of the word. Only the questions which are very tricky I have taken. No derivations will be discussed. No direct derivations. Only questions in which you might face problem while solving, those have been discussed. नेक्स्ट बोलू क्या?
लिखा क्या, कहाँ लिखा? नेक्स्ट, ओके. Now see, you will find this question in every sample paper. This was a previous year compartmental question. Compartmental. ठीक है, ऐसे ही खराब गया था एग्जाम, फिर से दे दिया टफ क्वेश्चन, लिटिल ट्रिकी. कंपार्टमेंटल में फिर से बैक लगाना था. सी इन द टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर, determine the readings of ideal ammeter and ideal voltmeter. Now we have to understand regarding ideal voltmeter. Ideal voltmeter, पहले ideal ammeter. Ideal ammeter. अच्छा, ammeter is a device to measure current. To measure what? Current flowing in a branch. Current flowing in a. So ammeter is connected in series. First thing you must know about ammeter. Ammeter is connected in series with the branch where you will measure current. Ammeter का कनेक्शन कैसे होगा रे? Ammeter is connected in what? Series with the branch. With the what? ब्रांच. नाउ आइडियल एमीटर का मतलब जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है. रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज व्हाट? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एमीटर की रेजिस्टेंस की वजह से ओरिजिनल जो करंट फ्लो कर रहा है उसका वैल्यू चेंज हो जाए. अगर एमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो वो क्या करेगा? ओरिजिनल जो करंट है उसको क्या कर देगा? चेंज कर देगा. बट यू नीड द एक्यूरेट रीडिंग. So we try to make, practically it is not possible to make zero. So for a practical ammeter, the resistance is very low, but if you are considering a situation where the situations are ideal, then resistance will be how much? Zero. So that it will not change the value of current. अदरवाइज इसकी रेजिस्टेंस की वजह से ओरिजिनल जो करंट है दैट विल बी चेंज. आई इक्वल टू वी बाई आर. सो आर बढ़ जाएगा, सीरीज में आर बढ़ जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा, एमीटर का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस, एंड द ओरिजिनल करंट इन द ब्रांच विल चेंज एंड यू विल गेट एरर इन द मेजरमेंट, एरर इन द वर्ड. दैट मींस सर इफ वी वांट करेक्ट रीडिंग बाय एन एमीटर वी ट्राई टू मेक द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर वेरी लो. इन आइडियल सिचुएशन इट विल बी zero. Very important question, remember. Now let us discuss about ideal voltmeter. Ideal voltmeter, these are all measuring instruments. Ammeter, voltmeter, these are what? Measuring instruments. That means obviously they will have some winding of their own inside. If they are measuring instruments, they will have some winding. You have seen in ammeter there is a pointer which will be rotating. If that is rotating, that means obviously a motor is there. The motor is working inside. If a motor is working inside, the motor has got its winding. That winding will provide some resistance. Some what? Resistance. But in ideal cases, we will consider how much? Zero. We will try to minimize, but we cannot make it zero. We cannot make it. But in question they have mentioned that the reading of what ammeter? Ideal ammeter and ideal voltmeter. Okay, not okay. Now voltmeter का क्या काम है? To measure what? Potential difference. तो मान लो तुमको मेजर करना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा कनेक्शन में सेम रहता है? सीरीज और पैरेलल? पैरेलल. सो व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर? इन सीरीज और पैरेलल? पैरेलल. बिकॉज जिन दोनों पॉइंट के बीच में तुमको पोटेंशियल चाहिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा. कैसे? सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा?
or potential difference or what? That means sir, voltmeter is connected in what? In what? Parallel with the branch across the points where potential difference is to be measured, is to be what? Measured. तुमको ये रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस मापना है. मान लो ये करंट जा रहा है आई, तो पोटेंशियल कितना होगा? आई इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. आई इंटू वर्ड आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अभी मान लो वोल्टमीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा? कुछ करंट ये साइड में भी बाईपास होगा, बिकॉज इट इज ए जंक्शन. इट इज ए वर्ड जंक्शन, मतलब ऐसा पॉइंट जहां से करंट डिवाइड होगा, जहां से करंट क्या होगा? डिवाइड होगा. मान लो तुमने एक बैटरी लगाया है, अभी बैटरी से करंट निकला, आई करंट. क्या करंट? अभी तुम चाहेगा कि पूरा आई करंट किसके तरफ फ्लो करे? फ्लो आर, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट? आर. अभी यहां से मान लो 5 एम्पियर निकला, आर में चला गया 3 एम्पियर और 2 एम्पियर चला गया किसके तरफ? वोल्टमीटर. तो पूरा करंट आर के थ्रू फ्लो हुआ क्या, या कुछ करंट बाईपास होकर वोल्टमीटर की तरफ चला गया? तो तुमको एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्या, या एरर मिलेगा? एरर मिलेगा, बिकॉज यू वांटेड द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टोटल करंट आई, बट आउट ऑफ द टोटल करंट आई सम पार्ट हैज गॉन इनटू द voltmeter for its own working. The voltmeter has drawn some current from the supply. The voltmeter has drawn some current from the supply. This is the supply. तो सप्लाई से वो खुद कुछ करंट ले लिया अपने वर्किंग के लिए. उससे क्या हुआ? हमारा रीडिंग में इंपैक्ट पड़ गया. द रीडिंग वी गॉट दैट वाज नॉट एक्यूरेट. सो इसलिए हमने क्या किया? हमने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस को बना दिया इंफिनिटी. क्या बना दिया? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो करंट का वैल्यू थ्रू द वोल्टमीटर विल बी, करंट थ्रू द वोल्टमीटर विल बी वी बाई इंफिनिटी, वी बाई आर. तो करंट थ्रू द वोल्टमीटर विल बिकम हाउ मच? जीरो हो जाएगा. मतलब वोल्टमीटर से कोई करंट जाएगा क्या? नहीं. पूरा करंट किसकी तरफ जाएगा? आर की तरफ. और यहां पे तुमको अगर पूरा करंट आर की तरफ जाएगा, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर करना पड़ेगा? आई इंटू आर. एंड दैट विल बी शोन बाई विच डिवाइस? दिस इज ए मीटर. मीटर मीन्स ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मीटर ऑफ व्हाट? वोल्टेज. voltmeter. ammeter, measurement of ampere current. ammeter. So these are measuring instruments. How the connections you are giving, that you have to judge. इनको क्या पता मुझे वोल्टेज मेजर करना है, करंट मेजर करना है, मेरा कनेक्शन कैसा था, वो तो हम लगाएंगे. हमको मालूम है कि पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम रहता है? वोल्टेज. सो विल कनेक्ट पैरेलल. बट हमने फिर सोचा कि अगर वोल्टमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है, तो वो खुद करंट अपने तरफ ले लेगा, कुछ करंट ले लेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा. सो विल गेट ए डिफरेंट रीडिंग, विल गेट ए एक्चुअल जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का चेंज आ रहा है वो मिलेगा, या कुछ अलग मिलेगा? अलग मिलेगा. इसके लिए हमने वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या बना के रखा? इंफिनिटी बनाना पॉसिबल है क्या? इट इज ओनली पॉसिबल इन विच सिचुएशन? आइडियल सिचुएशन. सो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर के लिए क्या होगा बोलना? प्रैक्टिकल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर विल बी इंफिनिटी और वेरी हाई. So this was a little introduction regarding ammeter and voltmeter. Then we are ready to solve the numerical. Please write. Yes.
वाह, can I wrap? Okay sir, very good. Now see, let me draw the two diagrams here again given in the question. So this is our first diagram. This is the emitter connected. This is your battery of 9 volt. 9 volt. This is 1 ohm. This is 6 volt. This is again 1 ohm. And here is the voltmeter connected. Now see the polarity minus plus. This is figure number A. Figure number A. We want the reading of emitter and what? Voltmeter. Emitter reading is very easy. How sir? Very easy. See. First you decide the direction of current in the circuit. There are two battery. We know current flows from positive to negative. तो 6 वोल्ट किस तरफ करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? 6 वोल्ट. 6 volt. 6 volt will try to flow the current in anti-clockwise. And 9 volt. 9 volt. ध्यान से. You see. You see carefully. This is anti-clockwise. करंट कौन सा टर्मिनल से फ्लो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल से. तो 6 वोल्ट का पॉजिटिव से घूमेगा करंट, ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज. ये भी पॉजिटिव है ना रे, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से ये भी कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? क्वेश्चन में डायरेक्शन भी दिया था, दैट वाज नॉट वेरी क्लियर, सो विल ड्रॉ द डायरेक्शंस हियर. ये आई का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ? क्यों हुआ बोलो? बिकॉज बोथ द बैटरीज आर फोर्सिंग द करेंट टू फ्लो इन विच डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? और एक चीज से हो जाता क्लियर सर, कैसे? ये माइनस और ये, तो इस बैटरी का प्लस इसके साथ कैसे कनेक्टेड है? माइनस के साथ. और इस बैटरी का माइनस प्लस के साथ. मतलब 9 वोल्ट का बैटरी जो है उसका पॉजिटिव 6 वोल्ट का बैटरी का नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और 9 वोल्ट का बैटरी का नेगेटिव 6 वोल्ट का पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है. इन दीज सिचुएशंस बोथ द वोल्टेजेस आर ट्राइंग टू मेक द टोटल करंट फ्लो इन एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट मींस दे बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर. दे बोथ आर सपोर्टिंग ईच अदर. मतलब आज के बाद हम क्या याद रखेंगे? इफ यू हैव टू बैटरीज E1 एंड E2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये दोनों का मिला के टोटल वोल्टेज कितना होगा? टोटल ईएमएफ कितना होगा? E1 प्लस E2. दिस इज कॉल्ड व्हाट मोड? दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग मोड. व्हाट मोड? This is called supporting mode. Okay, not okay? So in this situation, we can very easily find out the current. What is current, sir? Current is equal to total potential difference or total EMF divided by total resistance. Total EMF divided by total. So I equal to total EMF. Total EMF अभी प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा, ऑब्वियसली प्लस होगा. सो 9 प्लस 6 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा करंट को? 1 + 1. मतलब कितना रे? 15 बाई
मतलब कितना एम्पियर? 7.5 एम्पियर। 7 पॉइंट, दिस इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। रीडिंग ऑफ द एमीटर मेजर्स करंट। सो दिस इज रीडिंग ऑफ व्हाट? रीडिंग ऑफ व्हाट सर? एमीटर। वाह, अभी क्या मेजर करना है? वोल्ट मीटर का रीडिंग। नाउ दिस इज आवर वोल्ट मीटर। लेट मी ड्रॉ दिस पोर्शन हियर, दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन, only this portion I am going to draw here again. So this is my voltmeter, ये प्लस ये माइनस, यहां पे ये रेजिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ए और बी के बीच में। ए और ये प्लस टर्मिनल है और ये मतलब बी कनेक्टेड है प्लस के साथ, ए कनेक्टेड है माइनस के साथ। ये कितना वोल्ट का था? 6 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 1 ओम। करंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा था? बी से ए या ए से बी? इन दिस डायरेक्शन, मतलब बी से ए। वेरी केयरफुली, आई, है ना। अभी पोलैरिटी मार्क करेंगे। पोलैरिटी, बैटरी का छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला एनोड कैथोड, एनोड। और ये रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है प्लस से। रेजिस्टेंस में करंट कैसे जाता है? हायर टू लोअर, मतलब रेजिस्टेंस का ये माथा होगा प्लस और ये माथा माइनस। समझ में आया? रेजिस्टेंस का पोलैरिटी कैसे देंगे? हाउ वी जज रेजिस्टेंस पोलैरिटी? डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कहां से कहां जा रहा था? बी से ए, तो बी पॉजिटिव होगा और ए मतलब हायर टू लोअर। और बैटरी का पोलैरिटी कैसे डिसाइड होगा? छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला नाउ बी से ए मेरे साथ साथ चलना है, बी टू ए मेरे साथ साथ चलना है। आई वांट द पोटेंशियल डिफरेंस। वाई बी टू ए? बिकॉज मुझे चाहिए पॉजिटिव का पोटेंशियल माइनस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी बी किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ, है ना। ए किसके साथ कनेक्टेड है? नेगेटिव के साथ। तो मैं कहां से कहां चलना शुरू किया? बी टू ए। अभी कुछ साइन कन्वेंशन याद रखना, अभी कुछ साइन कन्वेंशन याद रखना। व्हाट आर दोस साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन इज प्लस से माइनस अगर हम चले तो पोटेंशियल को लेना पड़ेगा नेगेटिव। क्या लेना पड़ेगा? पोटेंशियल नेगेटिव। माइनस से प्लस पोटेंशियल को लेना है, पोटेंशियल का चेंज को लेना है पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट सर, बी से ए चलना है, बी से ए। तो बी में मान लो पोटेंशियल था वीबी, कितना था? बी में पोटेंशियल था वीबी। फिर प्लस से माइनस साइन कन्वेंशन क्या बोलता है? माइनस। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा? आई इंटू आर, आई इंटू ओम्स लॉ। माइनस से प्लस, कितना वोल्ट का बैटरी था? और मैं कहां पहुंच गया? ए पॉइंट में। मतलब मैं बी से कितना पोटेंशियल लेके चलना शुरू किया था? वीबी। जब मैं चलना शुरू किया था तो रेजिस्टेंस ने कितना वोल्टेज खा लिया? आई इंटू आर। और बैटरी ने मुझे सपोर्ट किया, कितना से सपोर्ट किया? 6। और जितना मेरा बचा कुचा पोटेंशियल है सारा लेके मैं कौन सा पॉइंट में बैठ गया? ए पॉइंट में। कौन सा पॉइंट में? ए पॉइंट में। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? मैं कहां से जर्नी शुरू किया था? बी से रेजिस्टेंस कुछ खाया, ये बैटरी मुझे सपोर्ट किया, मैं कहां जाके बैठ गया? ए पॉइंट में। देखते हैं ए में मेरे पास कितना बचा? वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू आई आर माइनस 6। आई का वैल्यू कितना निकाला था हमने? 15/2। 15 आर का वैल्यू 1 माइनस, so 7.5 minus 6 is how much? 15/2 मतलब 7.5।
7.5 minus 6 is how much? 1 point. This is the reading of the voltmeter. So voltmeter reading is how much? 1.5 volt. And ammeter reading is how much? 7.5 ampere. Understood? Not understood? Please solve. This is the question in Arihant book also. This is given wrong answer solution. So you must follow this solution. This is done very wrongly. They have given the answer potential difference to be 9 volt, जो voltmeter का reading है. Voltmeter पूरा potential difference कैसे measure कर लेगा? 9 volt not, sorry, 15 volt. They have given total potential difference how much? ये पूरा 15 volt voltmeter measure कर पाएगा क्या? वोल्टमीटर वो दोनों माथा में पोटेंशियल मेजर कर पाएगा जिस दो माथा में उसका कनेक्शन है ना? तो अगर बी पॉइंट को ये माना है और ये ए पॉइंट है तो ए से बी में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दैट विल बी मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, नॉट द एंटायर सर्किट. अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? These are very important questions. You write these in a separate previous year questions copy that will lessen your hardships in the last phase of exam. You will find these questions only in sample paper and you will learn wrongly because we all have a habit of dependency. साइन कन्वेंशन लिखना. दिस इज द साइन कन्वेंशन. प्लस से माइनस, माइनस, माइनस से प्लस, प्लस.
लिखा क्या? हाँ, now the next numerical will be your task similar analysis you have to do. I am drawing the diagram as it might not be visible enough. See, figure number B. Figure number B. This is figure number B. You have a battery, you have a emitter, you have another battery, but now the polarities are changed. You can see this is 9 volt and this is 6 volt, and here is your voltmeter. This is plus, this is minus, this is 1 ohm, this is 9 volt already. And this is 1 ohm. This is what? Only thing you need to understand in figure number B, again you have to do the similar procedure. You have to find out reading of emitter and reading of what? Voltmeter. That means, sir, sign convention will get changed. Only sign convention will get changed. And one thing you must know, that here current का direction कैसे होगा? बोलो. How the current is going to flow? 9 वोल्ट चाहेगा किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना? क्लॉकवाइज. एंड 6 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज. बड़ा कौन है दोनों में? 9 वोल्ट. सो 9 वोल्ट विल डोमिनेट द करंट डायरेक्शन. डिसाइड कौन करेगा? जो डोमिनेटिंग है. द वन हु इज डोमिनेटिंग दैट विल डिसाइड. दैट मीन्स सर यहां पे प्लस और प्लस कनेक्टेड है. तो अगर मैं कभी ये कनेक्शन देख लिया, दो बैटरी प्लस और प्लस कनेक्टेड है. कैसा कनेक्शन है? प्लस और प्लस. दिस इज द कनेक्शन से. सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज व्हाट? माइनस. सो सर ने क्या सिखाया? माइनस से प्लस. अभी अगर मैं बोलूं ए से बी चलो, तो बी ए, माइनस से प्लस क्या रही? प्लस. प्लस से माइनस नहीं होगा. इक्वल टू वर्ड. सो वी ए माइनस बी बी क्या होगा? E2 माइनस, मतलब माइनस होगा. वो E2 बड़ा होगा तो E2 माइनस E1 होगा. अगर E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2 होगा. दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. दैट इज द वर्ड. दैट मीन्स सर अगर बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ माइनस होगा, और बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ प्लस होगा. सो इन द लास्ट न्यूमेरिकल नेट वोल्टेज कितना आया था? 9 plus 6. But in this case net voltage or net EMF will be how much? 9 plus 6 or 9 minus 6? That means it will be, and current will be in which direction? Clockwise direction. Current will be in which direction? Clockwise direction. And then you try to find out the reading of emitter and reading of voltmeter similarly. Only keeping these numerical aspects in mind. Understood? Not understood? Okay. So we'll continue our discussion in the next lecture.